Good morning, students. Today, I deliver lecture on reproduction in fungi. We already discussed asexual reproduction in fungi. So, today we discussed about sexual reproduction in fungi. Because of basic clear is very important. A little bit discussion about previous class, like that asexual reproduction, in which mainly two types, sexual and asexual. Vegetative also part of asexual reproduction. So do not take more time, short time. What is spore? Minute, simple and basic reproductive structure. Sporangia bearing zoospore and liberate spore. Sporangiophore bearing sporangia, and in which sporangia bear spores. So this picture is very important. Please be concentrate this picture. Yesterday we were discussed about asexual reproduction. Like that, first one was fission, in which fission means mitotically dividation of two cells. Septation let down and daughter cell is same new individual arise. Like budding, we discussed earlier or previous class. This is the outward growth of parent cell and mitotically divide and nucleus migrate daughter cell and new individual become. This is arthrospore. Fission, most of fission, most of conidia. Budding, हमें एग्जाम्पल भी याद होना चाहिए कि कौन सा रिप्रोडक्शन किसमें होता है, तभी तो आप बेसिक क्लियर कर पाओगे. सो कॉनिडिया इज फिजन. बडिंग मोस्टली यीस्ट में होता है, जैसे बेसिडियोमाइकोटा होते हैं एंड एस्कोमाइकोटा में बडिंग्स लाइक दैट. बेसिडियोमाइकोटा, हमने बेसिडियोमाइकोटा में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पढ़ा है, बट एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन किससे होता है? बडिंग से. सो mainly budding reproduction occur in yeast. Arthrospore. Fragmentation of mycelium occur in Erysipeae, powdery mildew disease. Asexual reproduction. This is a arthrospore. Fragmentation of mycelium and occurs new individual. And this is a chlamydospore, intercalary growth, resting structure also. Fusarium, formation in fusarium. After later stage, chlamydospore किसमें बनते हैं? Fusarium, zoospore and aplanospore. This is a exogenous conidia, and this one both of endogenous. Endogenous means this is covered by a plasma membrane like this, burst out, and this is a columella. Aplanospore, non-motile, and this is a zoospore. Zoospore, zoosporangium, liberate zoospore. Endogenous means covered है ये, जबकि exogenous means this is no covered, exogenously, upper surface. And zoospore liberate. This is a motile, biflagellate, kidney shape. So I think clear this is topic. This is also important. We discussed earlier asexual reproduction fruiting body. Conidia occurs in fruiting body. Like that, 4 type fruiting body. First one, Acervuli, Pycnidium, Sporodokia and Cynema. अब हम ये पढ़ेंगे किस किस में होती है ये फ्रूटिंग बॉडी. एसरवुलाई. जब तक आप रेड रोट ऑफ सुगरकेन की बात करेंगे, कोलेटोट्राइकम की बात करेंगे, सो सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि दिस इज अ फ्रूटिंग बॉडी इन विच कोनिडिया 4 bearing conidia of Coledotrichum
Conidia4, this is Chitti, Conidia4, this is Chitti, Conidia, oil globules होता है इनमें, this is a Coleotrichum, Coleotrichum, whatever whatever species, but Coleotrichum having asexual fruiting body like that Acervuli. Second, Cynema. Cynema is an aggregation of Conidiophore, and Ceratocystis is an example of Zygomycota, and Fusarium also, Sporodokia, is a asexual fruiting body. You have clear seen this picture, macro and micro Conidia. Mycelial mat here, bed-like, and Pycnospore. This is a ostiole, open neck, flask shape. This is a peridium, and this is a Pycnospore. Okay. Now we study about what is sexual reproduction. What is sexual reproduction? In asexual reproduction, no fusion of two nuclei. In which sexual reproduction? Union of two nuclei, fusion of two nuclei, gametes of opposite sex. A gamete is a unisexual haploid. It is called the sexual reproduction. Deuteromycetes lack sexual reproduction. It is a very important. Deuteromycota is an imperfect fungi. Why? Because of lack of sexual reproduction. That's why this is imperfect fungi. Deuteromycota में कभी भी sexual reproduction नहीं होता है, उसमें हमेशा sexual reproduction की कमी होती है, इसीलिए हम उसे माइटोस्पोरिक फंजाई कहते हैं, एनामॉर्फिक फंजाई कहते हैं, और एनामॉर्फिक, माइटोस्पोरिक due to lack of sexual reproduction. There are two distinct phases in the life cycle. एक होता है haploid, एक होता है diploid. अब पीजी और पीएचडी के बच्चे जानते हैं, वेरी वेल नोन, व्हाट इज हैप्लॉइड एंड डिप्लॉइड, पर यूजी के बच्चे हमेशा सोचते हैं कि ये क्या है, क्या तो हैप्लॉइड है, क्या डिप्लॉइड है. जहां नंबर ऑफ क्रोमोसोम इन द न्यूक्लियस सिंगल हो, एन और एक्स, इज द हैप्लॉइड फेज. ओनली सिंगल न्यूक्लियस, सिंगल क्रोमोसोम. और डिप्लॉइड मीन्स 2x, यानी 2 compatible, मीन्स नंबर ऑफ. डिप्लॉइड कब बनता है? आफ्टर फ्यूजन. 2x नंबर ऑफ क्रोमोसोम इन एंड विद द फर्टिलाइजेशन. आफ्टर फर्टिलाइजेशन डिप्लॉइड होता है. डिप्लॉइड के बाद मियोसिस होता है. मियोसिस के बाद में वापस हैप्लॉइड बनता है. हैप्लॉइड कब बनता है? आफ्टर डिप्लॉइडाइजेशन, आफ्टर एंड विद द फर्टिलाइजेशन हैप्लॉइड बनता है. और डिप्लॉइड कब बनता है? जब हैप्लॉइड 2 compatible न्यूक्लियाई फ्यूज, wherever formation of diploid phase. Monoecious, because sexual reproduction पढ़ने से पहले, before studied, we discussed about what is monoecious, what is dioecious, what is homothelic, what is heterothellic fungi. Monoecious means homothelic, मतलब when both the sex organ or female, both the sex organ, male and female organ, on the same mycelium, same thalli, this fungus is said to be monoecious or homothelic. Homo means same, यानी मेल और फीमेल ऑर्गन सेम थैलस पे रहे. This is a monoecious. Dioecious, when the male and female sex organ or positive or negative strain separately on different mycelia, different thalli, is known as heterothellic dioecious. I think this is a clear to you. बिकॉज ऑफ मोनोसियस मतलब दोनों मेल एंड फीमेल ऑर्गन एक ही उस पे होंगे, सेम थैलाई पे होंगे, सेम माइसीलियम में होंगे. वेरेवर डायोसियस मींस मेल एंड फीमेल सेक्स ऑर्गन अलग अलग थैलाई और अलग अलग माइसीलियम पे होंगे. दिस इज अ डायोसियस. ओके. देन प्रोसेस ऑफ प्लाज्मोगेमी, कैरियोगेमी एंड मियोसिस. 3 फेज ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन. सेक्स ऑर्गन्स होते हैं, उन्हें हम गैमेटेंजिया कहते हैं, और जो सेक्स सेल्स होती है उन्हें हम गैमेट्स कहते हैं. सेक्सुअल स्पोर को हम क्या क्या कहते हैं? अभी तक हमने पढ़ा कि एसेक्सुअल स्पोर को हम क्या कहते हैं? माइटोस्पोरिक, एनामॉर्फिक. वेरेवर सेक्सुअल स्पोर को हम क्या क्या कहते हैं? मियोस्पोर, क्योंकि ये मियोसिस के बाद प्रोड्यूस होते हैं. मियोस्पोर, डिप्लोस्पोर,
diploid, sexual spore, etc. So plasmogamy, the fusion of the plasma of the gametes, यानी fusion of the two cells, wherever join two cells, या fusion of the plasma is a plasmogamy. Simple, इसके नाम से ही दिख रहा है तुमको, plasmogamy, the fusion of the plasma of the gametes. Gamete means gametes. Gametes क्या है यहाँ पे? I told earlier, gamete क्या है यहाँ पे? Sexual organ. Karyogamy, the fusion of the nuclear of the gametes. अब जो प्लाज्मा गैमेट्स में न्यूक्लाई है, उसके बाद में न्यूक्लियस का फ्यूजन होना. सबसे पहले दो सेल्स मिली, सेल्स के बाद में दो न्यूक्लियस मिले, न्यूक्लियस मिलने के बाद में क्या हुआ? कैरियोगेमी. कैरियोगेमी इन लोअर फंजाई. There is complete fusion of the nuclei of the two different strain gamete in the sexual union. Dikaryon in higher fungi. Karyogamy in lower fungi means there is a diploid. Dicaryons, higher fungi. Ascobasidiomycota is a dicaryotization. Here is not take term diploid, only dikaryotic, because this is a phase of monokaryotic, haploid and diploid between. So we use dikaryotic. The fusion of the two nuclei of different strain is delayed, and the pair of the nuclei is called dikaryon, Ascomycota and Basidiomycota. लोअर फंजाई का नाम मैं बार बार लेती हूँ. क्या होती है लोअर फंजाई? ओमाइकोटा, काइटिडियोमाइकोटा, जिनमें जूस्पोर बनते हैं. ठीक है. हायर फंजाई कौन सी है? एस्कोमाइकोटा, बेसिडियोमाइकोटा. Then dikaryotic mycelium, the mycelium having such pair of nuclei is called dikaryotic. Monokaryotic, where the mycelium possesses single haploid nucleus. अब टर्म आती है, what is dikaryotic and what is monokaryotic? Same haploid and diploid. Dikaryotic, जिस माइसीलियम में पेयर हो न्यूक्लाई का, यानी दो न्यूक्लाई हो, वो डाइकैरियोटिक माइसीलियम होगी. मोनोकैरियोटिक में wherever mycelium possess single haploid nucleus, this is a monokaryotic mycelium. We talk about meiosis. meiosis क्या होता है? जब डिप्लॉइड हो गया, डाइकैरियोटिक हो गया, यानी दो न्यूक्लियस का फ्यूजन हो गया, तो उसके बाद क्या होगा? zygote immediately undergo meiosis to produce meiospore. In some fungi immediately, and some fungi after rest, then meiosis. After karyogamy, reduction division take place in the diploid nucleus. यानी reduction होगा, haploids में change हो जाएगी वो, और haploid stage is established. So meiosis क्या है? Fused होगा diploid nucleus, undergo meiosis, which reduce the number of chromosome to haploid. यानी diploid से वो reduce करेगी chromosome और haploids में change हो जाएगी. उसके बाद क्या होता है? Haploid nuclei get surrounded by a small amount of cytoplasm. यानी वो न्यूक्लियस थे, अब उनके ऊपर क्या हो गया? प्लाज्मा ने कवर किया है, small amount of cytoplasm, and secrete a wall. यानी इनके ऊपर वॉल बन जाएगी, न्यूक्लियस के ऊपर वो स्पोर बन जाएंगी. Method of sexual reproduction. Here 5 types sexual reproduction. Method of sexual reproduction, 5 types. This is a planogametic copulation. This is a gametangial contact. Third one, gametangial copulation, and spermatization and somatogamy. It is very simple. माइकोलॉजी को बहुत सारे बच्चे बहुत टफ मानते हैं, जबकि ये बहुत इजी है. इट इज अ टेक्निकल सब्जेक्ट. प्लेनोगैमेटिक पॉपुलेशन. सबसे पहले आप नाम पे जाया करो. कोई भी टर्म आती है, आप उसके नाम पे जाओ, बहुत कुछ डिनोट करती है. टर्म्स डिस्क्राइब सेल्फ. प्लेनोगैमेटिक पॉपुलेशन मींस, प्लेनोगैमेट क्या पढ़ा था अपन ने? प्लेनोस्पोर, एप्लेनोस्पोर. प्लेनोस्पोर मींस मोटाइल स्पोर. अब हमें ये समझ में आ गया कि ये प्लेनोस्पोर की बात कर रहा है, मतलब ये लोअर फंजाई की बात है, यानी जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा वो लोअर फंजाई में होगा. प्लेनोगैमेटिक
must at least one compatible sex organ is motile. Planogametic means fusion of two free gametes of which at least one must be motile. यानी free two gametes का fusion होगा, उसमें से at least one must be motile. Means one must be planogamete. Planogametic का मतलब, gametic का मतलब समझ में आ रहा है क्या है? gametes sex organ, two gametangia. Plano means at least one must be plano, means motile. So we discussed this is a three type isogamy. This is a planogametic copulation. Please be clear. Concentrate this diagram. This is a isogamy, anisogamy, oogamy. Planogametic copulation further divide in three type. किसमें होगा ये तुम्हें समझ में आ चुका है. Mostly Chytidiomycota. Like that three type के होंगे. आइसोगेमी, एनिसोगेमी, ओगेमी. आइसोगेमी मींस, आइसो का मतलब क्या होता है? सेम गैमेट, यानी जिनका शेप और साइज स्ट्रक्चर सब सेम हो, जिनका साइज शेप सेम हो. फ्यूजन ऑफ आइसोगैमेट्स ऑफ सेम साइज एंड शेप, यानी शेप और साइज उनका सेम हो. एग्जांपल है ओलिपीडियम एंड सिनकाइट्रियम इन बिलोंग टू काइटिडियोमाइकोटा. एनिसोगेमी, एनिसो का मतलब समझ रहे हैं आप, जस्ट अपोजिट हो गया, यानी उनके साइज में डिफरेंट हो. इन विच गैमेट्स मॉर्फोलॉजिकल सिमिलर, मॉर्फोलॉजिकल आपको सिमिलर दिख रहे हैं, मोटाइल है दोनों, बट डिफरेंट इन साइज. प्लीज बी कॉन्सेंट्रेट. डिफरेंट इन साइज, मॉर्फोलॉजिकल सिमिलर बट डिफरेंट इन साइज. दिस इज ए लार्जर, दिस इज ए शॉर्टर. एनिसोगेमी. एग्जांपल्स एलोमाइसिस, ब्लास्टोकैलिडिया also belong to Chytidiomycota. And this is a oogamy or heterogamy. Heterogamy means this is a different, one is motile and another is non-motile. This is a egg is non-motile and this is a male organ as a motile. This is a heterogamy means different fusion of motile male gametes with non-motile female gametes. This is a heterogamy. Example Monoblepharella. Next slide's example already I given in the next slide. So this is a planogametic copulation. One must be motile, okay, and second one is gametangial contact. This is a gametangial contact, means differentiate structure male and female organ. Clearly identify this is a male organ, this is a female organ. Is belong to Ascomycota, Basidiomycota, not Basidiomycota, Ascomycota and Oomycota. Here is clear distinguishable character of male organ and female organ, and we can identify easily as a male organ and as a female organ. Female organ is a oogonium, male organ is a antheridium. And gametangial copulation, here is gametangial copulation means mix. This is a gametangial copulation. Same hyperfusion, same cells fusion occurs in Zygomycota. Occurs in Zygomycota, Mucor, Rhizopus fungi, etc. In which fusion of entire content of two contacting gametangia. Means to morphological similar gametangia fuse. You have clearly seen this picture. This is a morphological similar fusion of two morphological similar gametangia. Next, spermatization. Spermatization किसमें होता है? Rust fungi rust fungi का study किया अपन ने. Spermatization in which rust fungi in which receptive hypa is a female organ, spermatia is a male organ. We discussed in next slide. Somatogamy, you have clear this seen this picture. This is a somatic cells. Anastomosis, yani contact between two somatic cells.
somatic hypa anastomosis with each other, यानी fusion of two somatic cells is a somatogamy. Like that basidiomycota, ascomycota. अब हम एग्जांपल्स ध्यान में आ गए हैं. ये काइटिडियोमाइकोटा में होगा प्लानोगैमेटिक. दिस इज गैमेटेंजियल कॉन्टैक्ट. ओमाइकोटा क्योंकि डिफरेंशिएट ओनली दो में ही है, ओमाइकोटा और एस्कोमाइकोटा में. एंड दिस इज ए गैमेटेंजियल कॉपुलेशन, जाइगोमाइकोटा, राइजोपस, म्यूकस, म्यूकर. स्पर्मेटाइजेशन ओनली रस्ट फंजाई. सोमेटोगेमी, एस्कोमाइकोटा एंड बेसिडियोमाइकोटा. So detail we further discussed. Planogametic copulation. I told earlier, involve the fusion of two necked gamete. This is a necked gamete. One or both gamete are motile, known as planogametes. I told earlier, plano means motile, gametes means sexual organ. Isogamous, anisogamous, heterogamous. Isogamous means this is morphological similar, shape and size. Anisogamy, this is a morphological similar but different in size. This is a larger, this is a shorter, smaller. Morphological similar but different in shape. Example here mentioned: Syncytium, Plasmodiophora, isogamy, anisogamy, Alobices, Monoblepharis. This is a heterogamous or oogamous, means one is motile and second is non-motile. Okay, this is a non-motile egg and this is a motile male organ. Fusion between. Isogamy, I told earlier, morphological similar, identical male and female gametes are called isogametes. When fusion with each other, then it's called isogamy. Anisogamy, dissimilar male and female gamete. Anisogamy means similar in size, morphological, but different in shape. And heterogamy, I already told you. Gametangial contact, found in many fungi, like that Oomycota and Ascomycota. You don't believe this. बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं रिप्रोडक्शन ऑफ फंजाई में से. इवन आप पीजी का एग्जाम उठा लीजिए, JRF, AO, ARO, SRF, ARS, बहुत सारे क्वेश्चन. लाइक दैट आइसोगेमी का क्या एग्जांपल है? ओके, सो गैमेटेंजियल कांटेक्ट मतलब दो गैमेटेंजियल का कांटेक्ट हो, जो कि टू गैमेटेंजिया of opposite sex, Oogonium and Anthidium, Ascogonium and Anthidium, come in contact, and one or more gamete nuclei migrate from the male gametangium, Anthidium, to the female gametangium. Means male and female contact, the male gametes nuclei migrate male to female gametangium by dissolution of wall of female organ. Aspergillus, Penicillium, most of like the sexual reproduction in Ascomycota and Oomycota is totally gametangial contact. Like this. This is a female organ, this is a male organ. This is a Anthidium, this is a Oogonium. Oogonium means female organ, this is a male organ. Oogonial wall. Periphery, Oogonial wall. Periplasm, this is a periplasm. Ooplasm, this is a ooplasm. Anthidium, this is a nucleus, and this is a female nucleus. And fertilization tube, this is a fertilization tube. 1 second.
Sorry for interruption because of battery level low of laptop. This is a Pythium, Albugo, Pernospora, wherever Umicota means Umicota group is a female. This is a male organ. This is a nucleus migrate into female organ by fertilization tube take place and wall dissolve of female organ and fertilization tube passes nucleus into female organ. There is a Ascomycota. This is also Umicota, but here similar in Ascomycota. This is a Ascogonium, has a like female organ, and this is Antheridium. Fertilization tube take place and nucleus migrate male to female. Gametangial copulation, the fusion of the entire content of two contacting compatible gametangia take place. This is simple. I told earlier gametangial copulation. This is a gametangial copulation. This is gametangial copulation. Clear? See, this is a picture, gametangial copulation, similar hypal fusion. So we discuss about gametangial copulation. Example, Mucor, Rhizopus, Entomphora, and Zygomycota. Entire content of one gametangia passes into another through pore develop in gametangial wall at the point of contact. Three type gametangial copulation: hologamy, direct fusion, anisogametangial. Aniso means वही fusion between two unequal gametangia. Zygorhynchus, direct fusion, Mucor and Rhizopus. Two morphologically similar gametangia fuse and to become a single cell. This is an example. Gametangial contact is, you have clear seen this picture. This is a similar gametangia fused, and this is zygospore. This is a zygospore sexual spore. Spermatization in some advanced fungi like that rust fungi, here is sexual process, minute spore like spermatia. This is a spermatia as a male organ. This is a receptive hyphae, is a female organ. Spermatia carried by किसके थ्रू आते हैं? एयर, वाटर, इंसेक्ट के थ्रू आते हैं. और स्पर्मेशिया जो कि रिसेप्टिव हाइपी है उसमें वॉल बनाएंगे डिसॉल्व करके, वॉल को डिसॉल्व करके पोर बनाएंगे. पोर बना करके स्पर्मेशिया अटैच होगा ट्राइकोगाइनी से. ट्राइकोगाइनी मींस रिसेप्टिव हाइपी. दिस इज ए ट्राइकोगाइनी एंड migrate into cytoplasm, rest of wheat. So this is a positive and negative, and spermatia receptive hyphae and male nuclei migrate into the female nuclei. Somatogamy. Sex organs are not produced. Somatic cells take part in sexual function and fuse together. Morcella, Caegiza, Agaricus, and many higher fungi. Anastomosis, somatic cells fusion. Male, this is a female, as a, and male nucleus migrate into female organ. Type of sexual spore. oospore, a thick walled sexual resting spore. अब हमने पढ़ा क्या बनता है sexual spore. जब sexual process, sexual reproduction हो गया उसके बाद sexual spores. Sexual spores कैसे बनेंगे? A thick walled sexual resting spore. Oomycota में हमेशा oospore बनेंगे. कैसे होंगे? Thick होंगे. Sexual resting spore होगा produced by the union of two morphological different gametangia. Oospore. This is a oospore. This is a triple walled lipid, also contain food material, also reserved. This is a resting structure also. This is a sexual spore also, and this is a diploid. oospore कैसे होते हैं? ऐसे. Zygospore, a thick walled sexual resting spore produced by fusion of two morphological similar gametangia. Example, Rhizopus. This is a zygospore. I told earlier, this is zygospore, two similarly gametangia fusion. And this is a ascomycota, ascospore. Ascospore क्या है? Sexual spore produced in space-like shake-like structure. कैसा है ascospore? ये एस्कस है. एस्कोस्पोर हमेशा कवर्ड होते हैं एस्कस में. sac like structure in which ascospore produce only ascomycota group and number in 8. हमेशा एक चीज ध्यान रखना, एस्कोमाइकोटा में एस्कोस्पोर बनेंगे
एस्कस इसकी बॉडी है, ये सैक लाइक स्ट्रक्चर है, इसमें से एस्कोस्पोर निकलेंगे और ये हमेशा 8 नंबर में होते हैं। आप काउंट कर सकते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8। दिस इज द बेसिडियोमाइकोटा। Basidiospore, sexual spore produced on a club-shaped structure known as basidium. Generally, 4 basidiospore are formed. You have clearly seen this picture. This is a basidiospore, 4 in shape, and this is a club-shaped basidium. ये क्या है? Basidium. जबकि इसका कवर क्या है? एस्कस। क्या डिफरेंस है दोनों में? ये एंडोजीनसली बन रहे हैं, ये एक्सोजीनसली। ये आउटवर्ड यानी ऊपरी सतह पे बन रहे हैं, ये अंदर बन रहे हैं। तो ये एक्सोजीनसली होंगे, ऊपर बनेंगे, 4 नंबर में होंगे, हमेशा 4 ही बेसिडियोस्पोर होंगे और बेसिडियोमाइकोटा में बेसिडियोस्पोर बनेंगे। होमोथेलिक, आई ऑलरेडी टोल्ड, सेम थैलाइज मींस मोनोसियस, मेल एंड फीमेल ऑर्गन बिलोंग टू सेम थैलाइज। हेटेरोथेलिक, heterothelic means different यानी dioecious. This is a requirement of different compatible thalli. And सबसे पहले heterothelic किसने दिया? Phenomena of heterothelism was reported by A.F. Blaxley in 1904 in Newcastle. Phenomena of heterothelism A.F. Blaxley ने दिया in 1904. Parasexual reproduction. What is difference between parasexual and sexual? Sexual reproduction में हमेशा क्या होगा? स्पेसिफिक पॉइंट पे आएंगे। कैसे? सबसे पहले प्लाज्मोगेमी होगा, केजियोगेमी होगा और मियोसिस होगा, जबकि पैरासेक्सुअल में ऐसा नहीं होता। और सबसे पहले पैरासेक्सुअल किसने दी? पोंटेकॉर्वो एंड रोपर ने 1952 में एस्परजिलस निडुलस में। और इसमें ये तीनों पॉइंट स्पेसिफिक पॉइंट पे नहीं होते, यानी सीक्वेंस में नहीं होते, जबकि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में सीक्वेंस में होते हैं। सो क्लास इज ओवर बिकॉज टाइम इज ऑल्सो लैप्स. So I think everything is clear.